So welcome to Bioinformatics A4 section class. Okay, so today we are going to perform motif and domain analysis using different domain and motifs databases. Okay, so we are moving to our lab manual. This is our today lecture. So we are trying to uh, find consider domain and motifs of motif in a sequence, in any sequence. Okay, so there are two popular databases. One is considered domain databases at NCBI. This database is located at NCBI, and there is another databases that's known as PFAM or protein family database. Okay, so we will go through with these two databases. So first of all, we will move to consider domain database websites. Just copy this and paste here. It will lead to you the specific website. Okay, so if you are looking here, there are different considered domain databases. Considered domain databases is a protein annotation resource that consists of a collection of well annotated multiple sequence alignment models for ancient domains and full length proteins. Okay, so we are going to CDSearch, considered domain search. Okay, this is a database. In a database is a collection of data, and most of these data are well annotated, and that are collected from literature as well as experimental analysis. And CD search is a tool that's use our query sequence and search in these databases. Okay, so just click on this CD search, then this is the window, and if you are just let me zoom this page. Okay, so I think this is quite good now. Interprotein or nucleotide sequence or accessions. So in this case, we have we have protein sequence. We can also insert accession, but in case of accession, you should have accession from NCBI databases, right? So therefore, and it is difficult, or it may be if our sequence is from a newly assembled genome, then definitely the accession will be differ from NCBI accession. So we will prefer to use protein sequence. And for protein sequence, okay, we here we have some sequences. Uh, Test protein domain. Okay, so these are some sequences, and we are trying to find the conserved domain in this sequence. Okay, so just copy this and paste here. So this is let's suppose this is an unknown sequence. Okay, this is an unknown sequence, and we are finding the conserved domain of this protein sequence. So if you are looking here, the sequence should be in FASTA format. So it should be start with the greater sign, then gene identifier, and then sequence. Now this is FASTA sequence, and you can also check here. There are different databases. These are बैकग्राउंड डेटाबेसेस कि आप इनमें से कौन सा डेटाबेस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं. सो दिस इज ऑप्शन.
ये आपके पास ऑप्शन है। CDD मीन्स कंजर्व डोमेन डेटाबेसेस V3 version 3 with with 0.19 version. ओके, हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बाकियों को भी पी फैम। अगेन बैकग्राउंड में अगर हम डेटाबेस डिफरेंट रखना चाहते हैं, दिस इज जस्ट लाइक ब्लास्ट। जिस तरह हम ब्लास्ट के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सेलेक्ट करते थे बैकग्राउंड में, सिमिलरली यहाँ पे हम डिफरेंट डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, राइट। सो डिफरेंट डेटाबेसेस का पर्पस डिफरेंट है, बट दिस इज मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस। एंड इसके अंदर तकरीबन नियरली all well annotated as well as computer curated domains are present in this database. अब curated database क्या है? curated database का मतलब है कि कंप्यूटर मॉडलिंग यूज करके किसी प्रोटीन का अगर डोमेन डिजाइन किया गया हो तो उसे हम क्यूरेटेड डोमेन कहते हैं, ठीक है, क्यूरेटेड डेटाबेसेस। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड डोमेन्स। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बट इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो क्यूरेटेड डेटाबेसेस हैं, स्पेशली जो कंप्यूटर के ज़रिए सीक्वेंसेस की बेस पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो डेटाबेसेस डिज़ाइन किया गया है बैकग्राउंड में डिफरेंट डोमेन्स को सेट करके, तो उसे हम क्यूरेटेड डेटाबेस कहते हैं, राइट। So in this case, we are just using CDD, and this is the expected value. Expected value are the three threshold value. This is by default value. Default value जितना हम इसको स्मॉल करते हैं, लाइक अगर पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे मज़ीद ज़ीरो ऐड कर दूँ, it means we are specifying our sequence to highly specific domains, ठीक है। so but पॉसिबल है अगर हम इसको हाईली स्पेसिफिक करें तो हाईली स्पेसिफिक मींस मोस्ट सिमिलर। जैसा कि ब्लास्ट के अंदर हम देख रहे थे, हम ई वैल्यू जितना हम बढ़ाते थे माइनस में 10 के पावर में हम इंक्रीज करते थे, उतना ही उसकी जो सिमिलरिटी सर्चिंग रिजल्ट है वो स्पेसिफिक होता था। सिमिलर टू द ब्लास्ट रिजल्ट, expected value here is working similar in similar pattern, right? So that we are using default value and composition based statistical adjustment. If you are these are composition based is a new composition where implement in our PS Blast, which largely abolished the necessity of a low complexity filter. Okay, this is a low complexity filter. Filter का मतलब ये है कि filter हम कौन सी चीज़ों को filter करते हैं जिनकी अगर कोई कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो किसी एक डेटा के अंदर, कम्प्लेक्सिटी मीन्स नंबर ऑफ रिपीट्स ज़्यादा होना, दिस इज़ अ कम्प्लेक्सिटी। अगर आप जीनोम की बात करते हैं ना, देर आर टू मच रिपीटिशन, दैट्स आर नॉन एज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, दिस टाइप। सो इस तरह की कम्प्लेक्सिटी या सिमिलरिटी सर्चिंग के दौरान जब अलाइनमेंट होती है, उनकी कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उसको हम रिमूव करने के लिए और ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर लाइव सर्च। यस, ये लाइव सर्च है, हम क्योंकि हम डायरेक्ट ही इसको सर्च कर रहे हैं, हम इसको डाउनलोड करके डेटाबेसेस को कंप्लीट जीनोम को भी हम सर्च कर सकते हैं। So then maximum number of hits, this is the maximum number of hits, how many numbers of hits uh, should be there, maximum number। सो रिजल्ट शुड बी कंसाइज, स्टैंडर्ड, फुल, ये कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, जितना हो सके कंसाइज। रिजल्ट आने के बाद हम इसको स्टैंडर्ड लेवल पे भी देख सकते हैं और फुल पेज ओपन करके भी देख सकते हैं, हम आगे देखेंगे इसके बाद रिजल्ट के बाद। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस। So uh, one of an important feature of conserved domain databases means as NCBI is its fastest process। अगर आप इसको देखते हैं तो ये बहुत फास्ट है, ठीक है।
विद इन अ सेकेंड आपके पास रिजल्ट आया है। अगर आप सेम प्रोटीन आप दूसरे डेटाबेसेस के लिए यूज़ करिए, फॉर एग्जांपल प्रोटीन फैमिली के लिए जिसके लिए हम यूज़ करेंगे इट्स नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल के प्रैक्टिकल के अंदर। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट सर्वर। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन डेटाबेसेस के अंदर सबसे फास्टेस्ट क्या है, CDD है, NCBI। Okay, then look at this. This is our domain. What is the name of our domain that is present in our sequence? Is the MIB, Major Intrinsic Protein, MIP. This is a protein domain. And what is the function of this domain? You can read from here. What is the function of this domain? ठीक है? So on the basis of this domain, we can find what may be the possible function of our sequence. Okay, so in this case, this is major intrinsic protein superfamily. And what is the major intrinsic superfamily? This is a superfamily function as a membrane channel that selectively transport water, small neutral molecules, and ions out of and between cells. The channel proteins share a common fold, the N-terminal cytosolic proportion, followed by 6 transmembrane helices. This may be different, okay? So, uh, ये जो डोमेन नेम है ये आपके प्रोटीन सीक्वेंस के हिसाब से चेंज होता है। Therefore, we are not focusing the basic function of this domain. So, but you should know the what may be the possible domain in your sequence and what is the function of that domain. ये आपको पता होना चाहिए, आपको फाइंड होना चाहिए। And the e value for this domain is 5.6, and if you are looking at this is log value -14 की अगर आप बात करते हैं इट्स मीन्स हाईली एक्यूरेट। अगर ये ई वैल्यू हम ज़ीरो पॉइंट सॉरी ई वैल्यू हम -5 के साथ जो पावर में -5 हो then that's our acceptable value, ठीक है। but if you are looking in this case then this is -14, it's means it is highly specific and accurate domain. So then we can also check here the align sequences. This is the database sequence. This is the sequence. Oh, sorry. This is our sequence, and this is CDD domain, the conserved domain databases domain sequence. ठीक है, ये आपके पास एक सिग्नेचर होता है डेटाबेस के अंदर, and on the basis of this signature द बैकग्राउंड जो सर्च है वो इसी सिग्नेचर की बेस पे सर्च करके हमें बता देता है कि हमारे पास जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसके अंदर कौन सा डोमेन प्रेजेंट है, राइट। सो नाउ वी कैन कॉपी दिस and can tag with our sequence. This was the first sequence and this was taken from CDD-NCBI search, right? So this is the result of our conserved domain database search tool, okay, using NCBI search. So now we can also validate our sequence using another database using another databases. That's okay. I think before going to the next database we should uh, now the batch search sequence. Okay, here is another types of conserved domain search tools. This is batch search. This is CD search that we have performed here.
So in CD search, we can use only a single sequence at a time. Okay, what is the main difference between CD search and batch search is the number of sequence that we can use for the searching. So CD search is a tool that can obtain only a single protein sequence, protein or nucleotide sequence. For example, if we go back to the CD search, okay, so we were looking for the domain. Okay, here is the domain and structure, and this was databases. Here there are multiple options: CD search, batch search. Okay, so this we have already gone through this method. This is a CD search, single sequence. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे FASTA है तो single FASTA format. Okay, let me go back. CD search. So यहाँ पे आप single sequence search कर सकते हैं. ठीक है, लाइक हमारे पास एक सीक्वेंस है, हम एक ही सीक्वेंस एट अ टाइम सर्च कर सकते हैं. सो इफ वी हैव मल्टीपल सीक्वेंस, if you are looking here, there are more than 4 to 5, it may be hundreds of sequences, then what should we do? ऐसे केस में क्या हम 100 सीक्वेंस को इंडिविजुअली पी फैम के ऊपर चेक करते रहेंगे कि 100 टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे? No. So for that purpose, we have another option, that is batch CD search for multiple sequence के लिए. ठीक है, and this is batch search, batch web CD search tool. इसके अंदर and you in this search you can use a protein up to 4,000 sequences. 4,000 sequences. But there is also a limitation in this search tool, that is use of types of molecules. Means the batch CD search tool use only protein sequences, not nucleotide sequences, right? So if we have the multiple sequences of protein amino acids, then we can use this copy and paste here. So we are finding the conserved domain of more than one sequence at a time, right? Again, these are same as we have discussed in the CD search. Okay, then यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि आप इसको ईमेल एड्रेस भी दे दें. क्यों? बिकॉज इट मे टेक टू मच टाइम. अगर आपके पास जितना आपके पास नंबर ऑफ सीक्वेंस ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक टू मच टाइम. और अगर टू मच टाइम अगर ये ले रहा है तो इट्स मीन्स दे शुड बी सम प्रोसीजर और सम स्टेप्स कि हम इसको क्लोज कर सके. ठीक है, देयरफॉर हमें यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस टाइप करना है like this. Okay, so this is similarly जॉब ऑप्शन. आप यहाँ पे भी कोई नेम लिख सकते हैं. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब इनकी तरफ से ईमेल आती है तो उसके ऊपर टॉप लेवल पे जॉब ऑप्शन होता है. अगर आप मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, और सॉरी आप अगर आप मल्टीपल जॉब्स रन कर रहे हैं, एक जॉब्स आपने रन किया जिसके अंदर 100 सीक्वेंस है, और एक जॉब्स आप किसी और स्पीशीज से उठाया उसके साथ रन किया. सो अगर आप मल्टीपल जॉब्स रन कर रहे हैं तो आपको हर जॉब के लिए उसको एक टाइटल देना होता है, ताकि जब ये ईमेल करे
CD सर्च की तरफ से आपको ईमेल आए तो ईमेल के अंदर जॉब टाइटल मेंशन होता है, जिससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है CD सर्च का, ये कौन सा रिज़ल्ट है, ठीक है, कौन से डेटा का रिज़ल्ट है। ओके, सो देन just click here. At this stage I'm not inserting any email. Okay, so we will check the result of our CD search. Okay, it's okay, ये देखें, uh, these are statistical values, ठीक है। स्टैटिस्टिकल वैल्यूज मींस कौन से डे पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिकल वैल्यूज कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस यूज्ड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सीक्वेंसेस, हाउ मेनी डोमेन्स आर फाउंड एंड हाउ मेनी सीक्वेंसेस are specifically targeted like this. Okay, so these are our results, and uh, you can change the views uh, using different options. This is concise. Concise means highly concise. अगर आप इसको देख रहे हैं तो hit types super family. This is our first sequence. SIP 1.2. This is our second. This is third and the fifth sequence. Okay, so हमने 4 sequences यूज किए, 5 sequences यूज किए at a time, और उनका रिजल्ट हमारे पास इस फॉर्म में है। So we can also download. Just click on this. It will download a file, a tab delimited file, ठीक है, and okay, so this is the result of our CD search. ये देखिए, जब आपके पास when we use multiple sequence, then uh, we get results in the form of tab delimited file, right? So what is the next? अब हमने यहाँ से देखना है कि हमारे कौन सा सीक्वेंस के अंदर कौन सा डोमेन है। You can check here. This is our first sequence, and it's starting from, okay, I think I should copy this, and we should go to the Excel sheet. Just paste here. Now it's more readable file format अगर आप देख रहे हैं तो this is our sequence, this is super family, this is from 2, and this is e value, and this is, okay, no, this is यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, so it should be like this. ये short name should be here, इसके साथ होना चाहिए, और super family है, ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, ये चीज़ हमें बताती है। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस इज नेम ऑफ डोमेन्स, this is the name of domain. So if you are looking here, all sequences belong to major intrinsic protein family, right? यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं, देखिए आपके पास ऑल सीक्वेंसेस कहाँ किससे बिलोंग करता है, मेजर इंट्रिंसिक प्रोटीन सीक्वेंसेस से, ठीक है। If we have hundred and thousands of sequences, then we can process using our, there is our another tutorial. If you are looking here, we have already uploaded the data process. Yes, this is.
ओके, आप इसको देख सकते हैं, देखें, हाउ टू प्रोसेस लार्ज डेटा ऑफ पी फैम आउटपुट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ जीन, पार्ट 1। सो दिस इज सिमिलर, ये इसके लिए हमने पी फैम के ज़रिए जो आउटपुट हैं उसको हमने प्रोसेस किया है, बट सेम प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं जो आप सी डी सर्च से आउटपुट में रिजल्ट के तौर पे आपके पास आता है, राइट। So you can go through this, and definitely you will be able to classify and process this large data. Okay, sorry. Okay, so आप लोग इसको go through करिए। Is this clear to everyone? So in today Yes, practical, sir. we have completely gone through all parameters and values of CD search and batch cd search. Okay, and we have also discussed about the results and interpretations of our finding, right। हम यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए डिफरेंट, ओके, देयर वाज थ्री टाइप्स ऑफ डेटा मोड, एंड कंसाइज मीन्स जो हाईली कंसाइज है आपके पास, आप इसको स्टैंडर्ड पे करें तो ये वेयर इज व्यू, ओके, इट शुड बी, आई थिंक इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। देखिए, जब हमने स्टैंडर्ड के ऊपर रखा तो विद द स्पेसिफिक फैमिली देर आर आल्सो सम नॉन स्पेसिफिक मेब्स, ये ठीक है, ये देखें, दीज आर नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स पैरामीटर के जो हमने कट ऑफ वैल्यू रखा है उसके करीब करीब हैं, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग है, इनको देखें तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक, ये ठीक है। और इफ़ यू आर लुकिंग हेयर द ई वैल्यू, आप ई वैल्यू को देखें 10 से अबव वालों को, दिस इज हाईली स्पेसिफिक, और डेटाबेस के हिसाब से दिस इज आल्सो नॉन स्पेसिफिक। सो सम इश्यूज आते हैं कि आपके कंप्लीट हैं, जो आपका सीक्वेंस सबमिट किए हैं वो कंप्लीटली जो डोमेन के साथ डेटाबेस के अंदर उसके साथ अलाइन हो रहा होता है, समटाइम्स वो पार्शली अलाइन होता है। सो ये डिफरेंट ऑप्शन है, इनमें से हम कंसाइज के ऊपर अगर हम रखते हैं तो जो स्पेसिफिक है, अगेन सेम थी, ये यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, तो इसको अगर हम दोबारा से रन करते हैं दैन इट विल ओपन विथ फुल लेंथ, ठीक है। ठीक है, ये देखें, देर आर मनी additional domains also identified in addition with MIB। MIB के साथ बहुत सारे एडिशनल डोमेन्स भी हैं, बट द एडिशनल डोमेन्स आर नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स एक कट ऑफ वैल्यू से अगर नीचे आ जाए तो वो नॉन स्पेसिफिक होता है। ओके, सो आई थिंक दिस इज enough for today our practical। So what you have to do, you have to use a search, cd search, practically you have to use single sequence in cd search, and you have to use multiple sequence and cd search, and in this part, okay, here is the results, you should paste your sequence in this section, and you should discuss your results in interpretation section, all right, okay।
So this is your assignment. Okay, if there is any query, please let me know. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. So you can rejoin for discussion session. Okay. Okay, sir.